What if you had a secret trigger that could instantly shift your mindset into gratitude, bringing more joy and happiness into your life? Today, in today's practice, day 25, which is the magic cue, we are going to do this powerful practice that will help you to remember. It will act as a reminder to shift your mindset into gratitude and will change your entire life into abundance. Stay with me till the end because once you master this practice, you are going to change your life effortlessly. Okay, so let's start with days 25 practice, the magic cue. So days 25 practice, cue the magic. In this picture, you can see there's a setup kept as if a drama or an act is going to be started. We all are a part of an act. We are playing our role. So today we need to find hints and triggers to shift our mind into gratefulness. We need to search for hints throughout the day. So let's see what we need to do in today's practice. So life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. We all are here to play our role, correct? So life is all about playfulness. In everyday struggle, we have stopped playing our role perfectly. We are just running and running. Today, we need to take a pause and rediscover the magic all around us. We need to look for hints for which we should feel gratitude, okay? So let's see what we need to do. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. So today we are going to play. We are going to play an act, a game, जो हम यूनिवर्स के साथ खेलेंगे और हमें बहुत मजा आएगा. Okay, so let's see. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you achieve your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams, so it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. तो आज हमें इमेजिन करना है कि यूनिवर्स इज फॉर अस, इट इज फ्रेंडली, इट इज केयरिंग, ओके, इट विल गिव अस एवरीथिंग दैट वी वांट. कितने बार होता है ना, हमें कुछ हिंट्स मिलते हैं कि ऐसा हो गया था इसलिए ये चीज हुआ, आई वाज सो श्योर, मुझे लगा था, मेरा इंट्यूशन ये बोल ही रहा था. कितने बार होता है ना, वी फील दैट हाँ, वी हैव दैट इंट्यूशन कि दिस इज करेक्ट, दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस वर्क, नो दिस ऑप्शन इज राइट, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. हमें खुद को एक इंट्यूटिव फीलिंग आ जाता है, राइट? तो उसमें यूनिवर्स हमें हिंट्स देती है, पर्सनल क्यूज देती है, ताकि हमें पता चले कब हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, कब हमें वो फील करना है, ताकि हम ड्रीम्स के पास पहुंच सके. ओके, बिकॉज द यूनिवर्स कैन जस्ट वॉक अप एंड हैंड यू व्हाट यू वांट, इट यूजेस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो आपका जहां एनर्जी फ्लो होगा वही आपको मिलेगा. वहां हमें एनर्जी फ्लो करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है, जो चीज हमें चाहिए. तो द यूनिवर्स नोज यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड टू ब्रिंग फॉर्थ योर ड्रीम्स, सो इट प्लेज इट्स गेम. क्योंकि हमें पता है कि ग्रैटिट्यूड अगर हम फील नहीं करेंगे तो हमारा ड्रीम पूरा नहीं होगा, तो वो हमें हिंट्स देती रहती है, ट्रिगर देती रहती है कि ग्रैटिट्यूड फील करो, अभी फील करो. राइट नाउ यू नीड टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड बिकॉज इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम यू नीड टू ब्रिंग ग्रैटिट्यूड इनटू योर लाइफ. Right? It uses the people, circumstances, events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for the children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. तो आज जब भी आप कुछ भी चीज देखो, आप उसको एक क्लू की तरह मानो. अगर आप रोड में किसी को भी देख रहे हो जाते हुए, तो
अगर वो आपके फ्रेंड है तो उसके लिए थैंकफुल। अगर आपने एम्बुलेंस देखा तो आप खुद इतने परफेक्ट हो कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा, उसके लिए आप थैंकफुल करो। आपको एक रोमांटिक कपल दिख जाएगा तो उसके लिए यू विल फील सो गुड टू सी देम लाइक दैट, एंड उसके लिए आप ग्रेटफुल फील करना कि विश थैंक यू फॉर द परफेक्ट पार्टनर आई हैव। तो आपको बहुत सारी क्लूज मिलेंगे पूरे दिन जिसमें आपका माइंड को शिफ्ट किया जाएगा टू बी इन ग्रैटिट्यूड, राइट? तो ये आपको आज प्ले करना है थ्रू आउट द डे. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desires now. Suppose आपको कोई गाड़ी लेना है तो आपको वो गाड़ी दिख जाएगा जाते वक्त, तो आपको वापस से थैंक यू करना फॉर योर डिजायर, क्योंकि हमने क्या सीखा कि वी नीड टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड एज इफ इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, एज इफ आपको मिल गया है, राइट? तो अगर आप वो चीज देखते हो तो आपको वापस याद दिला रही है कि ग्रैटिट्यूड फील करो, आपको वापस से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है एज इफ वो आपको मिल चुका है, राइट? When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. Right? तो आज आपको बार बार ये चीज नोटिस करना है, आसपास में जो भी चीज हो रहा है बार बार आपके माइंड को शिफ्ट करना है ग्रैटिट्यूड में, राइट? They are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. तो आपको कुछ भी चीज दिखे तो आप ऐसे सोचो कि ये आपके लिए कोई क्लू है, ये आपके लिए ही कोई क्लू है, बिकॉज यू विल बी करेक्ट, यूनिवर्स इज गिविंग यू रीजंस। तो ऐसे ही कोई भी चीज आपको आके नहीं दिखेगा, आपको एक्सप्रेस करना है ग्रैटिट्यूड, इसलिए यूनिवर्स आपको दिखा रही है, राइट? The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. Okay? तो यूनिवर्स को पता है जब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करोगे तब तक आपका ड्रीम्स फुलफिल नहीं होगा। वो आपको हिंट्स देगी, आज आपको सारे हिंट्स को पकड़ना है और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। Cue the magic has become a daily game I play, and with practice I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. जैसे आप अपनी डेली एक्टिविटी में लेके आओगे ना, तो आप देखना एवरी डे आपको यूनिवर्स नई नई तरीके दिखाएगी क्लूज देने का, हिंट्स देने का, एंड आपको मजा आएगा उस समय एक्सप्रेस करके। When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the other healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with sickness, it's a cue to be grateful for your health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day I had. ठीक है? तो आज आपको कुछ भी चीज आपको दिख रहा है, आपको अपना पूरा थॉट प्रोसेस सिर्फ थैंक यू में लेके आना है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड में लेके आना है, ग्रेटफुलनेस में लेके आना है। छोटी छोटी चीजें, डे टू डे एक्टिविटीज को नोटिस करो एंड जस्ट फील ग्रैटिट्यूड। आप मॉर्निंग में उठ रहे हो और यू आर सीइंग फ्रेश एयर, यू नीड टू बी थैंकफुल फॉर दैट। इफ यू गेट अ amazing cup of coffee in the morning, you need to be thankful for that also. इसी तरीके से आपको सब चीज सोचना है, ध्यान लगाना है और अपने माइंड को शिफ्ट करना है into gratefulness. To play Cue the Magic today, all you have to do is be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, thank you for my perfect weight. You can thank you for my perfect weight. You can never do
too much gratitude, so you can choose to do more, and if you want you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you're following the magic practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always given to you. One of the many benefits of gratitude's magical practice is that it wakes you up, makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So universe, cue the magic. Right? अगर आप last 24 days perfectly कर रहे हो तो अभी तक you must have understood कि जो भी चीज आसपास हो रहा है उन सब के लिए gratitude express करना कितना जरूरी है, and you should feel privileged, right? तो अगर आपने किया, आप अभी तक उस जगह तक पहुंच चुके हो जब आप बहुत अलर्ट हो, जो भी चीज लाइफ में हो रहा है सब चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो. यू विल फाइंड मेनी मैजिक क्यूज थ्रू आउट द डे. ओके, जितना ज्यादा आप अलर्ट रहोगे, अवेयर रहोगे, उतना ज्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे, उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे अपने ड्रीम्स को अपने पास में. Got it? So wasn't it beautiful, right? Because magic cue is like you are playing your role, and today you are going to be alert. Express your gratefulness today throughout the day. Okay? So day 25 magic practice number, cue the magic. One you need to do is count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful as you are. And then the second is today be alert to whatsoever is going around you. आपको एटलीस्ट 7 ग्रैटिट्यूड क्यूज निकालने हैं फ्रॉम टूडेज इवेंट्स. आपको कुछ ना कुछ पक्का दिख जाएगा, इनफैक्ट ज्यादा ही दिखेगा. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अ हैप्पी कपल, इट कैन बी हैप्पी फैमिली, इट कैन बी योर बैंक, ATM, perfect weight, anything it can be. Okay, you need to find those 7 gratitude cues and be grateful for that, right? And then the third is before going to sleep, hold your magic rock in your hand and say thank you for the best thing that has happened throughout the day. So this was all about days 25 practice, magic cue, play with the universe today, enjoy your entire day and see kitna kuch aapko milega throughout the day, right? So stay tuned for the next day. Thank you so much.